हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल अर्ग लर्निंग। आज डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर। जेई मेन में क्वेश्चंस आया था 21 जनवरी 2026 में। दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी of molecular weight C6H12O3 gives positive iodoform test but negative tolerance test. When P is treated with dilute acid, it produces Q. Q gives positive tolerance test and also iodoform test. The compound structure of P is either of the four or maybe there could be a possibility of also two compounds. So let's see how it looks like. So मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो P है और मोलिकुलर फार्मूला है C6H12O3 C6H12O3। ये एलिफेटिक कंपाउंड है फॉर श्योर, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड है यह है CN और H नियरली N प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, और मगर इतना डिफरेंस नहीं होंगे। अगर CnH ट्वाइस N माइनस 2 इससे कम है H तो जनरली एरोमेटिक होता है। एक्सप्रेशन इज ऑलवेज बीन देयर। सो ये एलिफेटिक कंपाउंड है। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, दैट मीन्स इट शुड बी कीटोन। कीटोन गिव्स पॉजिटिव iodoform test. Iodoform test. No other compounds, even not aldehyde also. Not aldehyde. Aldehyde में एक एक्सेप्शंस है और वो है कि एसिटाल्डिहाइड CH3CHO it gives iodoform test. This is the only exception. Let's see. ये नहीं होंगे for sure because formula is completely different. So this is not the aldehyde. Okay, and P when treated with dilute acid produces Q. P acid, aqueous acid, Q. Okay, अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 1 2 3 4। इसमें आप देखो कि एक एसिटल है, ये भी एक एसिटल है, सॉरी ये कीटल है, ये एक एसिटल है और ये तो कुछ नहीं है, तो ये ऑलरेडी बीन डिलीटेड। अभी इन तीनों में से कोई एक होंगे। पहला स्ट्रक्चर है जिसमें कीटो है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शंस देंगे। आयोडोफॉर्म रिएक्शंस के ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाए थे, लिंक 1 में मैं दे दूंगा, उसमें आप देख लेना आयोडोफॉर्म रिएक्शन। और लिंक 2 टॉलेंस रिएजेंट और नेम रिएक्शन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाए थे ट्रिक्स के साथ, वो भी मैं लिंक 2 में डाल दूंगा। तो ये दोनों लिंक आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में। आयोडोफॉर्म रिएक्शंस कौन सा कंपाउंड देंगे? कीटो देंगे, मगर उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जो इसमें है, इस पे भी है, इस पे नहीं है। सो ये भी डिलीट हो गया। अभी बचा ये दोनों। इन दोनों में से कौन सा होंगे? आंसर इधर छिपा हुआ है। P is treated with dilute acid. अगर P में ये स्ट्रक्चर पकड़ू, इसमें अगर डाइल्यूट एसिड से ट्रीट करोगे तो ऑलवेज रिमेंबर दैट एल्डिहाइड CHO RCHO और एनी कीटोन RCO R dash when treated with catalytic anhydrous acid say HCl in presence of any alcohol say methanol, it will give the first hemiacetal RCHOMeOH. This is hemiacetal. Which one further reflux? Because this is we are using catalytic. It needs reflux in presence of methanol. Methanol is as a solvent, so enough quantity is there. It will give OME. So this is acetal. Acetal means if you hydrolysis give aldehyde, and if you treat ketone with the similar anhydrous catalytic acid
say HCl. In presence of methanol, ethanol, it will give first hemiketal and then R O M E O M E R prime. So it should be here R prime, not aldehyde, R prime. So this is ketal. Ketal means once you treat it with dilute acid, it will give the corresponding keto again. Now, the beauty is that when you use catalytic anhydrous HCl or catalytic anhydrous acid, say PTA, say Tollen sulfonic acid, it gives this compound plus H2O, which can be removed by Dinstack apparatus, or you don't have to know right now. बट यही एसिटल को और कीटल को आप सेम एसिड से ट्रीट करोगे विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, इट विल रिकन्वर्टेड टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन. सो इसमें देख लेते हैं ये कौन सा कंपाउंड देंगे, एसिटल है, तो ये अल्टीमेटली CHO देंगे एट द एंड. इट मीन्स दैट दिस कंपाउंड विल गिव CH3 CO CH2 CH इधर O. तो दिस इज एल्डिहाइड. और ये जो कंपाउंड है ये क्या देंगे, CH3 CO, ये भी CO देंगे क्योंकि ये कीटल है, so ये कॉरस्पॉन्डिंग कीटो देंगे CH3. Now you say, will it give tolerance test? What substrate will give tolerance test? Of course, aldehyde. Aldehyde gives tolerance test. Tolerance test, not ketone. Remember this. ये एल्डिहाइड है, ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देंगे, ये कीटोन है, ये नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देंगे. सो द आंसर इज 1. 1 is the correct answer. So I hope that this video you like. So make a comments, like it, and subscribe this channel for any future learning. मैं देख रहा हूँ मेरे चैनल में व्यूअरशिप कम हो रहा है. मेन रीजन ये है आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो. यूट्यूब पाथफाइंडर है और डिफरेंट पाथ में जा रहा है, तो एक पाथ में आप देख पा रहे हो, एक पाथ में नहीं देख पा रहे हो. आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे एंड यू विल गेट बेनिफिटेड फॉर श्योर. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.